Today is not one of the good days, you guys. Highway जो कि मैं गलत कर रही थी. Oh my god. This thing will not let me talk. Guys, the news is out. Oh god, I just want to scream out of happiness. Oh my god, इतना प्यार करने का मन कर रहा है ना आप लोगों को. You guys are so lovely. Like मुझे ना आज तक इतना कभी like I'm pregnant मुझे कभी इतना लगा नहीं. But after releasing that video, now that you all know, oh my god, I can't thank you enough for that little blessing जो आपने दी है. My heart is full and I'm so happy, loving all your comments, reading all your comments, replying to all those comments, and उसी चीज़ में I was just occupied a little. I know I'm not looking my best, but yeah, it is what it is. Like I already have a brown toned lipstick. I'm not wearing anything. I actually got my nails done. See these little hearts. They look cute now. So ये करवा के आई थी. And tomorrow we are actually going for a very exciting trip, जो कि one day trip होने वाली है. We are actually heading to Gurgaon for there is some concert which is happening. And you know, he enjoys that to bits, and that's like one of the bada wala koi world ka biggest DJ that is going to play. So he's very excited about that, and so am I, because he loves to do that, and I'm kind of sharing, like, you know, his interest, you can say. अभी what I have to do, मैंने actually मेरा सामान जो stuff था वो pack कर लिया है. Tomorrow we are planning to not to opt for a hotel, but शायद करना पड़ जाए because हम morning में निकलेंगे, and then the concert starts at 5. I am actually looking forward to do like a get ready with me. I have a very nice top and a pant that can fit me. मैंने Urbanic से मंगाई थी, and अनफॉर्चुनेटली या लकीली वो मुझे ना थोड़ा सा बड़े साइज में मिली, जिसको आई एम अभी एबल टू वेयर. ठीक है, देयर आर 2 पैंट्स इन टोटल. एक थी मेरी शीन की, which I got that in completely wrong size, तो वो मुझे अब बन रही है, बट मुझे लगता है कि अगले 2-4 हफ्ते में, 2 हफ्ते बाद वो भी फिट होना बंद कर देगी. सो आई हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग स्टफ. सो यू कैन सी आई एम वेयरिंग दिस पैंट विच आई गॉट फ्रॉम Meesho. Yeah, so this is how it looks, and ये काफ़ी मैची हो रहा है. अभी मैंने क्या पहना है इसके साथ में, लिए एक स्वेटशर्ट डाला है. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मीशो. दिस फॉर 300. ओ माई गॉड, सिर्फ 700 रुपीज़ में काइंड ऑफ यू नो कोर्ड सेट, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है. प्लस ये मुझे बहुत लूज़ है. कैन यू सी दैट? बहुत लूज़ है, तो मैं इसको बहुत बढ़िया से पहन पाऊँगी, और आगे भी ये मुझे लगता है 2 महीने चल जाएगा. ठीक है, अगली बार जो मैं पैंट मंगाने वाली हूँ ना, इसको मैंने मंगाया 32 साइज़ में. आई एम यूजुअली 28, तो मैंने 32 में मंगाया है. ये मेरा 2 महीने तक चल जाएगा. Okay guys, so we are on our way to Gurgaon, where the concert is happening. So we've come halfway. अभी हम लेंगे एक हाईवे. Okay guys, so at this point I've started releasing pregnancy videos and I'm happy. You know, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ with all the response, with all the beautiful wishes. I mean, you guys have started taking care of me more than my family, and I'm so proud of saying that. I mean, आप इतना प्यार से ध्यान रख रहे हो ना, और ऐसा वाला ध्यान रख रहे हो. Like, there was a reel जो मैंने obviously pregnancy के बाद रिकॉर्ड करी थी, but it was like बहुत initial pregnancy में, and I know तब मुझे बहुत ज़्यादा careful होना था, but I did a transition, just a छोटा मोटा जंप वाला. एंड यू गाइज, एंड मैंने उसको अभी रिलीज़ करी है, तो आप लोग उसके लिए भी बोल रहे हो कि टेक केयर ऑफ यू, डोंट जंप, यू नो, यूज़ प्रोडक्ट्स माइंडफुली एंड ऑल ऑफ दैट. थैंक यू सो मच. आई कैन नॉट टेल यू हाउ गुड आई फील. एंड टुडे इज़ नॉट वन ऑफ द गुड डेज. I have like severe back pain, plus my doctor is not available, so we are just checking with her. She's seeing in her private clinic, but she's not sitting in the hospital. We've been visiting her so far, so that is that. I've started reading Garbh Sanskar ke sessions. I've already booked one
which will happen on the 10th of December, and today is like what, 1st of December, and actually रात के 1:30-2 बज रहे हैं, तो almost 2 December हो गई है. And thank you so much for all the love that you have been giving. I am so happy and the baby is so happy. We have been growing. This is the food which I was having. So basically I'm so sorry again, I'm showing you food from outside, but we are soon trying to fix this. Okay, so this is how I look, and I mean if you can see, यहाँ पे तो ये टाई भी करना है, but yeah, I'm growing. I've gained almost 5 to 6 kgs since the beginning. So the milk is boiling. मेरे को बिल्कुल सिम पे रखा हुआ है इसको, and this is the powder which I've been having, which I was told by my gynecologist, by my doctor. It's Maxvida. This I got from Blinkit. Blinkit नहीं, मैंने Farmeezy से मंगाया है इसको. So ये almost काफ़ी अच्छा है. It tastes really good. This is also available in vanilla. I ordered this chocolate and I'm already loving it. But अभी ये खत्म होने वाला है. So tomorrow, as I mentioned, we are going to see doctor. तो एक बार देखते हैं if she's going to like कुछ और प्रिस्क्राइब करती हैं, कुछ और खाना होता है थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए. स्वाद ढूंढ रही हूँ मैं यार, इतनी थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेना है, बट यार थोड़ा. हाय गाइस, ओके सो स्वागत है आपका वापस इस चैनल पे. एंड आई डोंट नो मैंने क्या लास्ट बात करी थी, बट आई एम श्योर मैं इतनी हैप्पी नहीं थी. आई हैव सो मच टू शेयर विद यू गाइस, बट इससे पहले मैं आपको और मेरी बातों से बहुत ज़्यादा बोर करूँ. This thing will not let me talk. We have a lot of stuff from Blinkit, so I thought why not share like a mini haul with you all. So we have fresh cucumber, we have sambar onion, 2 capsicum, peeled garlic, ginger also, fresh, the natural eggs. We have some spinach, some mint leaves, milk, grated coconut, Kerala banana chips, some more milk, some curd. Okay, now this is something quite interesting and I will share a recipe soon. So मैंने मंगाया है ये Master Chow का chili oil Szechuan chili, Sichuan chili, I don't know. I'm gonna share a chili oil omelette की recipe very soon, maybe right after this. I've ordered for this green gram, natural goods eggs, ginger garlic paste, this English oven brown bread, sabudana. We have more white eggs, suji, Everest का तीखा लाल, गनगोर बारीक बेसन, some fresh lemons, धनिया भी है, मक्की का आटा, fresh veggies. Firstly we have this red carrot, tomato, more cucumber, we have green chilies as well, kanda and aloo. Well guys, I'm done settling everything and I've put milk to boil. यहाँ पे है ये chili oil जिसको मैंने निकाल दिया है. I'll just show you a close up. So फटाफट से बनाते हैं chili oil omelette. Well, not bad, huh? अब इसको फटाफट से खाते हैं. Okay, so this is how the omelette has turned out, and I'm gonna combine this with a plate full of salad. So I can't wait to have this, but not like this. So okay, so इसको पहन के मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है because the stuff is made up of velvet. और इसके ऊपर का ना ये कवर अप भी है. इसको अगर मैंने पहन लिया तो मेरे से ये AC नहीं बचने वाला. So I mean, let's. Oh God, I cannot wait. इतना पूरे घर में ना, you know what, पूरे घर में बढ़िया से इस ऑमलेट की चिली ऑयल की ना खुशबू फैल गई है. I cannot wait anymore. Let's have this. Well, pregnancy की cravings इतनी होती है that I'm not even sorry for finishing almost half of my food. बैटरी क्या इसकी डेड हो गई थी, तो आई हैड टू पुट दिस कैमरा ऑन चार्जिंग. ऑनेस्टली मेरा जो ऑमलेट होता है ना वो इससे मच बेटर होता है. इट्स जस्ट दैट इट हैज़ डिफरेंट फ्लेवर. थोड़ा सा जैसे आउटसाइड का फूड खा रहे हो थोड़ा सा वैसा लग रहा है, बट अगर मैं इसमें प्याज मिर्ची टमाटर डाल के मेरा बेसिक वाला ऑथेंटिक जो अपनी रेसिपी होती है इंडियन ऑमलेट की वो बनाती तो ये बहुत ज़्यादा यमी होता. You know, कुछ भी बात शेयर कर लेने से कितना अच्छा फील होता है. अभी एक
ऑलमोस्ट 2 आवर्स पहले मैंने एक रील डाली थी, उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे लाइक इन अ गुड वे, लाइक यू शुडंट बी डूइंग दिस, शुडंट बी ईटिंग दैट एंड ऑल ऑफ दैट बेसिस लाइक माई फूड हैबिट्स। तो मैंने ना बहुत सारा स्टोरीज पे बात किया और मुझे इतना हल्का फील हो रहा है। टुडे इज़ वॉट, टुडे इज़ 5th of December, ऑलमोस्ट मतलब 12 बज गए हैं, एक्चुअली 4th of December था। एंड सिंस यू ऑल नो दैट आई हैव रिसेंटली विजिटेड माई डॉक्टर, I'm gonna play some footage here like in some time and then I will talk to you tomorrow because आज का मेरा कोटा हो गया, like I'm feeling so damn happy and I was feeling totally opposite to what I am feeling right now. Trust me, you know what, you guys, like having virtual family like you is just magical. I'll see you tomorrow. If you have noticed, मैंने आपको बताया था that I was having back pain, ठीक है। मैं अगर ऐसे बैठ के काम कर रही थी तब भी मुझे एक ही साइड में, मतलब इस साइड में नहीं, टचवुड, एक ही साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड सिंस लास्ट 10 days आई वॉज नोटिसिंग दैट, एक्सपीरियंस कर रही थी मैं, बट इट स्टार्टेड लाइक ग्रेजुअली वो बढ़ते जा रहा था। That was something which was very annoying. So I told her about the situation and she said, madam, hoga hi na, because your posture is not right. And also the way I was sitting like cross-legged. नहीं बैठना था मुझे. I've been told to do a lot of things जो कि मैं गलत कर रही थी in order to, like, you know, especially for this particular period, pregnancy phase में I have to correct myself for so many other things. But what I am looking forward to from here is like next 15 days में हमारा, like, मेरा एक और स्कैन होने वाला है, which is like the most important scan of the pregnancy, and it's going to be an anomaly scan where they will scan the baby in 3D, 4D, we'll get to see the baby, किस पे गया है and all of that, and I'm really 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 excited for that. What I'm actually thinking is I will remove the makeup maybe and I will show you like a थोड़ा सा फटाफट वाला वो गेट अनरेडी विद मी है ना। ये बड़ा क्यूट है यार, ये जो पीजे है ना ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। सी यू नो व्हाट, द फैब्रिक, द फील, यहाँ पे भी मुझे इचिंग होने लग गई है बिकॉज आई हैव टाइड समथिंग। तो मैं रिमूव करती हूँ मेकअप एंड लेट्स डू द प्रोसेस टुगेदर। So this video is literally hitting different because मैंने complete video मेरे घर पे शूट किया था और ये मैं मेरे इस वाले घर पे शूट कर रही हूँ। लाइक आई एम एट माई मॉम्स प्लेस एंड हैविंग द बेस्ट टाइम। लाइक शी जस्ट डिड मसाज एंड आई एम लाइक रियली 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 लविंग इट। मैं यहाँ पे भी बहुत प्लान है मेरा अभी कुछ टाइम तो रुकने का, यहाँ पे पैम्पर होने का थोड़ा सा, एंड बिकॉज दिस मसाज एंड द फूड एंड एवरीथिंग, ओ माई गॉड, आई एम जस्ट लविंग एवरी बिट ऑफ इट। सो या आप मुझे बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, एंड यहाँ के भी कुछ रूटीन्स डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो दैट विल कम वेरी 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 सून ऑन माई चैनल। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी गाइस माय नेक्स्ट वन। टिल देन खुद जाने की खुद से प्यार करिए एंड आप मुझे बताना सो फार आपको ये प्रेगनेंसी जर्नी की जो वीडियोस हैं आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाना तो उसको भी कमेंट्स में मेंशन करिए और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच।